Okay, we are going to discuss your similarity lesson number 1 from 10th standard. आपण 10th standardचा तुमचा लेसन नंबर 1 घेणार आहे. ओके, काही मुलांना मराठीमध्ये कळत नाहीये, ठीक है, तो अपन हिंदी लैंग्वेज पण यूज करो. ओके डोमेश्वरी, आपके लिए तो और अच्छा हो जाएगा. हाँ ठीक है, चलो. व्हाट इज मीन बाय सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी मीन्स S for similarity, S for same. Same means look like a same, look like a same. एक सारखे दिसणे, एक जैसा दिखना यानी सेम, ठीक है. See this triangle and this triangle, both are equilateral triangle. Which triangle? So are they similar to each other? Yes. ये दोनों similar है? How? Because figure as it is same, look, they look like a same. Measurement ऊपर नीचे है पर they look like a same. That's why they are similar. Domeshwari, is this visible to you? Shaurya? No? This there. Dear, you please change your place. You should know. Wait. You should sit here. Okay. They look like a same. Okay. It means it's similarity. Congruency, जब हम congruency पढ़ेंगे तो congruency में हमें measurement same यानी same ही चाहिए. No compromise. अगर कोई triangle है, it's 6 centimeter, it's 3, it's 2. It must be 6, it must be 2, it must be 3. That time that two triangles are congruent triangle. आया समझ में? समजते सगळ्यांना? असं असतं. आता ही कॉन्ग्रन्सी प्रत्येक वेळा आपण बघूनच ठरवणार आहे का? प्रत्येक वेळा सिमिलॅरिटी म्हणजे जर तुम्हाला हे आयडेंटिकल साइन नाही दिले तर त्यावेळेला तुम्ही असं ठरवणार आहे का आर दे सिमिलर ऑर नॉट, आर दे कॉन्ग्रंट ऑर नॉट? फक्त ऑब्झर्वेशन वरून ठरवणार आहे का? इज इज पॉसिबल टू डिसाइड इज आर दे सिमिलर और आर दे कॉन्ग्रंट? नो. सो वी हॅव सम टेस्ट. आपल्याकडे काही टेस्ट आहेत. कोणत्या टेस्ट आहेत? म्हणजे कॉन्ग्रन्सीच्या टेस्ट वेगळ्या, सिमिलॅरिटीच्या टेस्ट वेगळ्या, आणि त्या टेस्टच्या बेसवर आपण काय करणार आहे? ठरवणार आहे. सो ह्या लेसन मध्ये आपण सगळं डिस्कशन करणार आहे सिमिलॅरिटी. वी हॅव टू डिस्कस अबाउट ओनली सिमिलॅरिटी. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग सिमिलॅरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल. हमें क्या डिस्कशन करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, wait. Okay, so first topic is your ratio of areas of two triangle. Ratio of areas of two triangle. Ratios of areas of how many triangles? Two triangles. मी shortcut मध्ये लिहिते. Okay, for finding this ratio you must have to know what we must have to know: area of triangle. Area of triangle. So what is the area of triangle? Very good. It's half into base into height. This is the area of triangle. Any triangle. By using this formula we are able to find area of triangle. जर तुम्हाला हा एरिया ऑफ ट्रायंगल एका ट्रायंगलचा काढला, दोन ट्रायंगलचा रेशो काढताना वी हॅव टू टेक ratio only. You have to consider if suppose if you have two triangles, triangle 1 and triangle 2. Okay, so area of first triangle, that first triangle, half into b1 into, no, it's h1 beta, h1. For second triangle, half into b2 into h2. Got it? So this will be your, after simplification you will get एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. रेशियो मीन्स आपको कैसे लिखना है? अपर और लोअर इसमें लिखना है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो आता है ना हमारा. रेशियो लिखना है यानी क्या करना है? हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. अभी रेशियो किसका किससे बोला है? फर्स्ट टू सेकेंड और सेकेंड टू फर्स्ट, वो भी देखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. सो दिस रेशियो ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल टू सेकेंड ट्रायंगल, these are the values. Simplify and now simplify, then you will get your final answer. That final answer is your ratios of areas of two triangles.
गॉट इट स्टूडेंट्स? बट इतना तो इजी नहीं होगा हमारा, थोड़ा लेंदी होगा. यानी प्रोसीड किया. लेंदी कैसा? देयर आर सम कंडीशंस. व्हिच कंडीशंस? सम टाइम while you are finding ratio of any two triangles, sometime while you are finding ratios of two triangles, sometime your base is same. Dear Kunal, no need to read. I will explain each and every word from your textbook. जास्त होईल पण कमी नाही होणार. So you have to give attention while teaching. लक्ष इथेच द्यायचंय सगळं. Okay कुणाल? If you have doubt then you should ask while teaching, but no need to lose your attention. Okay? Half of get cancel. Half of get cancel. So area of any two triangles, area of ratio of areas of any two triangle, it must be B1 into B H1 upon B2 into H2. ओके, हे ना रे. आता कंडिशन्स काय आहेत बघा. कंडिशन्स क्या क्या है? सम टाइम योर बेस सेम. दो ट्रायंगल का आपका बेस सेम रहेगा, कभी आपका हाइट सेम रहेगा, कभी दोनों भी सेम रहेंगे और कभी कुछ भी सेम नहीं रहेगा. अगर कुछ भी सेम नहीं रहेगा सो दैट विल बी फॉर्मूला B1 इंटू H1 B2 इंटू H2. अगर हमारा B1 सेम है योर रेशियो विल बी करस्पॉन्डिंग देयर हाइट्स, इट्स H1 बाय H2. अगर हाइट सेम है तो आपका रेशियो आएगा B1 by B2. If both are same, then they will get cancelled. So you will get your 1. Is this easy? Yes. It's too much easy, beta. Huh? There are how many conditions? 4 conditions. Condition 1, कुछ भी सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है. Condition 2, हाइट सेम है, हाइट या बेस सेम है. ओके, बेस सेम है. सेकेंड, थर्ड टाइम हाइट सेम है. फोर्थ टाइम ऑल सेम. So it's 1. Got it, students? So now you have to give this heading, ratios of areas of two triangle. Write down this formula and you have to write down this condition 1 and their property. From your textbook, they are given as condition 1. If height of both triangles are equal, then what will be the property? The ratio of areas of two triangles with equal height equal to ratios of their corresponding bases. Height same है तो उसका ratio corresponding base का आएगा. Base same है तो उसका एरिया करस्पॉन्डिंग टू देयर हाइट. दोनों भी सेम है तो इट मे बी 1. इट मस्ट बी 1, नॉट मे बी 1. इट मस्ट बी 1. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो यू हैव टू राइट डाउन नाउ. ओके, अभी जो भी हमने डिस्कस किया है नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन इन शॉर्टकट वे. ठीक है, शॉर्टकट मध्ये मी तुम्हाला लिहून देते. कंडिशन 1. व्हाट इज कंडिशन 1? H1 is not is equals to H2 and B1 is also not equals to B2. Then what will be the property? Means result. The area of ratio of areas of two triangles is corresponding to their base and height both. बेस भी आएगा और हाइट भी आएगा क्योंकि कट ही नहीं होगा ना, यहाँ पे काटछाट ही नहीं होगा. इट्स B1 H2 into B2. Got it? This is your first condition. Now second condition number 2. If your base same, okay, but your height will not same, so that time your property will be the ratio of areas of two triangle is corresponding to their height. Base will be cut, so remaining part its height only. So area of first triangle, ratio of areas of first triangle to second triangle equals to H1 upon H2. वो कट ही नहीं हो रहा है इसलिए वही रहेगा वो. That's the remaining part जो कि हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, so what will be your third condition? Condition 3. What is the condition 3? Base height will be your same, but Base will not be same. so base will not be your same. So that time the ratio of areas of these two triangle is corresponding to their Height. base. Yes.
हाइट सेम, हाइट नहीं है सेम तो बेस में आएगा, बेस रहेगा तो हाइट में आएगा, अगर दोनों भी सेम नहीं होगा तो दोनों भी आएंगे. Got it? So property areas of ratio of first triangle to second triangle. It's B1, B2. Got it, students? Is this visible, this part? Can I write here? Okay. Condition 4. Both are equal. B1 equals to B2. H1 equals to H2. Then property area of first triangle, area of second triangle is, no need to write, all are getting cut now, so it's one only. तो लिखने की जरूरत ही नहीं, वो पूरा ये हो जाएगा, कट हो जाएगा. Got it? You have to note down in your notebook. This is in very shortcut way. Okay? Okay. On basis of this information only, we are able to solve your first practice set 1.1. Got it? So now we are going to discuss in this lecture solved example. Okay? In second lecture, we are going to solve your practice set 1.1. Okay. So what is the first question? Before solving this solved example, you have to attend this activity. What you have to attend? Activity. Okay, in textbook only or book. Question number 1. What is question number 1? See. Okay, this is your first question from solved example, page number 3. I will write here page number. It's easy to find out here. Page number 3 from your textbook. This is your diagram. They are given us. What they are given? Dear. Okay. A is perpendicular to your BC. A is perpendicular to your BC. Segment DF is perpendicular to your D. You please stand up here. You both of you. You only. Segment DF is perpendicular to line BC. And A is your 4. And DF is your 6. Now on basis of this information, you have to find out ratios of areas of triangle ABC to triangle DBC. Already we are familiar with how to find your area of two triangles, area of any triangle, then ratio of areas of two triangles. तो अभी हमें क्या दिया है देखो अच्छे से. Where is your ABC? This is your ABC. हम पहले ABC को थोड़ा सा कलरफुल कर लेंगे, यानी इट्स इजी टू डिफरेंशिएट. अंडरस्टैंड तो हो ही जाएगा, पर डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग से दिखेगा आपको. एंड दैट पार्ट DBC, इज दिस विजिबल? DBC रिमेनिंग ट्रायंगल. देयर आर टू ट्रायंगल्स, नो, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. ये बैक साइड वाला ट्रायंगल है, ये फ्रंट वाला ट्रायंगल है. ओके, आर यू able to decide two triangles here? Triangle ABC and triangle DBC. Got it? Both triangles has their own heights. In ABC triangle it's AE height and DBC triangle it's DF height. Got it? You should check in DBC triangle height is out of triangle. Height जो है आपका थोड़ा बाहर है, ठीक है? तो हो सकता है ऐसे, तो हो सकता है हाइट मे बी इनसाइड द ट्रायंगल और मे बी आउटसाइड द ट्रायंगल. आर यू नॉट कंफर्टेबल विथ दिस? सो आई विल ट्राई टू टॉक इन ओनली इंग्लिश और मराठी. ओके, बिकॉज यू आर स्माइलिंग, नो? ओके, सो समजते हैं? काही डाऊट आहे? ठीक आहे, तर आपण घेऊ शकतो. हाईट आहे, बेस आहे. मला सांगा, ही जी इन्फॉर्मेशन दिली आहे हाईटची आणि बेसची दिली आहे का जे पाहिजे तुम्हाला तसं? कॅन यू ऑब्झर्व? बेस इज सेम हियर इन बोथ ट्रायंगल. ओके, द हाईट ऑफ द ट्रायंगल यू हैव टू कॉन्सन्ट्रेट ओनली ऑन ट्रायंगल ABC. Height is your AE, base is your BC. Here also base is your BC. So BC is same. It means your base is same. So ratio will be in their corresponding heights. So what are the heights? AE and DF.
Got it? Do you have all value of DF and AE? Yes. You have to put values and solve. So in solution, you have to write down areas in triangle ABC and triangle DBC. Base of both triangles are same. Okay, it's BC. Okay, therefore according to your proper conditions and their properties, so area of triangle ABC तुम्हाला टोटल डिटेलमध्ये तुम्हाला पूर्ण हे दिसून जाईल. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC काय असणार आहे? हाईट सांगा मला. फर्स्ट ट्रायंगल इट्स AE अँड इट्स DF. तुम्ही म्हणाल या ट्रायंगलमध्ये तर DF दिसतच नाही आहे मॅम, मग F कुठून आला? आउटसाइड आहे ना तो ट्रायंगलचा हाईट, म्हणून आया डोमेश्वरी आपको समझ में, ये आउटसाइड है. ओके डन. सो यू हैव टू पुट वैल्यूज. इट्स 4/6. देन सिंप्लीफाई, रिड्यूस कर लो इसे और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. इट मीन्स दैट इट्स 2:3. Got it students? Any doubt? Okay. Okay, we will proceed in next lecture. Thank you.